I did not know कि a thing like a distinction existed. कि talent पे नहीं depend करता, आपकी skill पे नहीं depend करता. जो primary factor है which decides कि आपकी distinction आएगी या नहीं, और you have the determination to work for it or not, is to have that mindset. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the second episode of Enlighten Hour. This is Alevel from Enlightism. Today we have our special guest with us, and we'll talk about how you can get distinction in your O-level or A-level exams and how you can deal with exam stress. Not only this, you'll get to know how you can do the last minute exam revision and much more. We have Hajra Bashir with us today. She's currently a freshman at NUMS Islamabad and doing BS in Biotechnology. In her O-levels, she secured 7 A stars and an A and a world distinction in Islamiyat. In A-levels, she got 2 A stars, 2 A's and a B, and was top in North Pakistan in English language. Assalamu alaikum, Hajra. I hope you're doing good. Your achievements... Yeah. So your achievements in the Cambridge exams are remarkable. Can you share your experience of achieving distinctions in OA levels without joining the academy, and what motivated you to aim for such a high academic performance? अच्छा, for starters, to be honest, Islamiyat की distinction पर मेरा ज़्यादा focus था क्योंकि I planned on getting the distinction for Islamiyat. Start में I wasn't feeling any peer pressure to join the academy क्योंकि start में everyone was at school. So I did not feel कि I had to join the academy to succeed. लेकिन जैसे जैसे exam season pass आ रहा था ना, तो the class was getting empty बहुत फटाफट. Everyone was leaving in favor of academy. And then I started to worry because whenever they used to come back from the academy, the only thing that they said was that the only way you can get an A star or perform well in your exams is अगर आप academy जाएं या फिर you balance it with school. So for me, उस वक्त मेरे लिए ज़्यादा stressful हो गया था कि I'm not going to the academy. What am I going to do to get the same grades as them? So I think कि primarily ये reason था कि when I went home, I worked harder as opposed to if I was going to the academy too. तो मेरा यही था कि उसकी वजह से आई वर्क हार्ड. और फिर अराउंड जनवरी फॉर द सेम ईयर जब हमने अपना एग्जाम देना था ना, माय सीनियर गॉट डिस्टिंक्शन फॉर इस्लामियात. तो अप अंटिल देन मुझे बिल्कुल कम्प्लीटली कोई आइडिया नहीं था. आई डिड नॉट नो कि अ थिंग लाइक अ डिस्टिंक्शन एग्जिस्टेड. फॉर मी एज फार एज आई कुड गो वाज कि आई नीडेड टू गेट एन ए स्टार और स्ट्रेट एज. So when I found out कि a distinction existed, I was like, I want that so bad. तो उसके बाद आई डबल्ड अप माई एफर्ट्स. मैंने जिस तरीके से मैं पढ़ रही थी, आई चेंज दैट अप अ बिट ताकि आई कुड गेट द डिस्टिंक्शन और आई कुड वर्क फॉर इट एटलीस्ट. एज फार एज मोटिवेशन गोज, मेरा प्राइमरी रीजन यही था कि आई काइंड ऑफ लाइक टू डू थिंग्स व्हेन पीपल से कि यू कांट डू इट, ऐसा हो नहीं सकता, इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है. तो मेरा यही होता है कि आई एम गोना डू इट एंड आई एम गोना शो यू एंड माई सेल्फ कि आई कैन डू दैट. So just that kind of obsession with doing things people say are impossible made a primary motivation hoti hai to do things that I do. So yahi mere reasons the to work for the Islamiyat distinction. And for the English distinction, I did not prepare for it like as properly कि मुझे distinction ही चाहिए. I've just always loved English and I had an amazing teacher. जो मेरी O levels की teacher थी वही उन्होंने मुझे A levels में पढ़ाया था. So she is and was my biggest role model for not only for the subject but as a person too. So the way that she helped me grow in that subject and as a person, it really helped me focus on her subject. वैसे भी मुझे English बहुत पसंद थी ना, तो उनकी वजह से I focused more on it and worked harder for that subject to kind of फिर I did not expect it, लेकिन I ended up getting the distinction in English too for A levels. Yeah. Well, I'm truly inspired by your journey, and there are times when people say yeah, you can not do it और ऐसा पॉसिबल नहीं है, और फिर आपने उन्हें दिखाना होता है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. So your success proves that students can get distinctions or even A stars when you have enough motivation or even without joining academies, because students का ये belief होता है most students का कि वो जब तक academy नहीं जाएंगे तब तक वो A stars भी नहीं ले सकते और या फिर distinctions भी नहीं ले सकते. So you proved it. So what unique tips you'd share with the students to get a distinction specifically in O-level Islamiyat and also in A levels English language?
मेरी टिप्स आर काइंड ऑफ लाइक, क्योंकि मेरे दोनों डिस्टिंक्शंस उस टाइप के सब्जेक्ट्स में आई हैं व्हिच वर लाइक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स, तो मेरी टिप्स फॉर इस्लामियात आर आल्सो गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर इंग्लिश. एंड पर्सनली मुझे नहीं लगता कि यू हैव टू गो अप एंड बियॉन्ड टू गेट द डिस्टिंक्शन. एज लॉन्ग एज यू डू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, तो यू कैन स्टिल गेट अ डिस्टिंक्शन एंड अ गुड ग्रेड. तो मेरी पहली टिप तो यही होगी कि व्हेन यू आर गिवन द होमवर्क, एंड इन सब्जेक्ट्स में होमवर्क बहुत ज्यादा होता है. आई रिमेंबर जब हमारा इस्लामियात का होता था, एवरी डे वी यूज्ड टू गेट सो मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द टीचर्स एक्सपेक्टेड कि हम सारे करके आए. तो यस, इट इज वेरी हार्ड, लेकिन जस्ट डू दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. वो इन द लॉन्ग रन जस्ट अपने नोट्स रिवाइज करने से बेहतर यही है कि आप वो भी प्रैक्टिस करें. एक मेजर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें उसको पूरा लिखकर, बट फॉर अदर क्वेश्चंस यू कैन जस्ट राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स और प्रैक्टिस देम. जस्ट काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्म कर लें कि आप किस टाइप के पॉइंट्स लिखेंगे. So that is super helpful to just kind of practice the homework that you're given. उसके अलावा the second tip I would say is कि don't be afraid to go to your teachers and ask them for help कि um, I want to do more than what is expected of me. तो आप मुझे किस तरीके से गाइड करेंगे, आप मुझे कोई स्टडी रिसोर्सेज बता दें, कोई टिप्स बता दें. माई टीचर हेल्प मी अलॉट विद द स्टडी रिसोर्सेज. उन्होंने मुझे सारा बताया था कि कौन कौन से ऑथर्स की बुक्स ओ लेवल्स इस्लामियात में पॉपुलर हैं. तो आई काइंड ऑफ गॉट all those books to make my notes. And English maybe when I compiled my notes, made my notes, practiced. So I looked for resources जो मेरी English की teacher was providing for us. कि मतलब क्लास में टीचर्स कहती हैं कि if you're interested in the subject तो you can do this research on your own. तो वही वाली research I used to do and add it to my notes to kind of give me an edge when it comes to my own notes. The third tip I would say is kind of related to my second tip is कि आप अगर चाहते हैं डिस्टिंक्शन चाहते हैं तो यू शुड गो काइंड ऑफ वेल अबव द सिलेबस रिक्वायरमेंट्स. व्हाट आई मीन टू से इज के बहुत डिटेल्ड जो है उनका कोर्स कंटेंट सीआई वाले हमें बता देते हैं. बट इफ यू काइंड ऑफ वांट टू एंड अप विद अ डिस्टिंक्शन यू कैन गो बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट. जैसे मैंने डिफरेंट स्टडी रिसोर्सेज अपने नोट्स बनाए थे, तो आप उनको यूज करके अपने नोट्स बना सकते हैं एंड मेक इट मच बेटर एज अपोज टू जस्ट relying on the syllabus requirements. Lekin when I say that, that is only for people who are like really hell bent on getting that distinction. लेकिन कीपिंग इन माइंड कि ये ना हो कि आप दूसरी इंफॉर्मेशन के बदले में जो एक्चुअल सिलेबस रिक्वायरमेंट है आप उसको ओवरलुक कर दें या उसको इंक्लूड ना करें. तो जो आपसे एक्सपेक्टेशन है आप उसको कंप्लीट करें एंड आफ्टर दैट इफ यू फील लाइक यू कैन स्टिल डू मच मोर तो फिर यू कैन डू काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेट दिस टेक्निक इनटू योर स्टडी मेथड्स या फिर जो भी है. The fourth tip I would say is कि give the test. ये मतलब it does not matter कि आपकी तैयारी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, सही तरह आपको आता नहीं है. Just give the test even if you're not fully prepared. सारे जून से भी टेस्ट हो रहे हैं, छोटे टेस्ट हो रहे हैं, बड़े टेस्ट हो रहे हैं. तो उससे आपको काइंड ऑफ एज अपोज टू आप अपनी पता चल जाए कि आपको क्या अच्छी तरीके से आता है, आपको ये भी पता चल जाएगा आपको क्या नहीं आता और किस तरीके से आपकी टीचर मार्क कर रही हैं एंड किस तरीके से एग्जामिनर्स मार्क करेंगे. तो उसका बहुत ज्यादा इट्स लाइक सुपर हेल्पफुल टू गिव द टेस्ट. क्योंकि एंड पे जब लास्ट मिनट आप रिविजन कर रहे होते हैं तो इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ द टेस्ट दैट यू एक्चुअली गिवन एग्जाम कंडीशंस या टेस्ट कंडीशंस में बैठ के, तो आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि आपको असल में कितना आता है. तो दैट वुड बी माय फोर्थ टिप. एंड फिफ्थ टिप अगेन रिलेटेड टू माय फोर्थ टिप इज गोइंग टू बी कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस में आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, तो आप जब खुद भी प्रैक्टिस करें तो काइंड ऑफ टाइम इट फॉर योर सेल्फ. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि बंदा इतने अच्छे तरीके से उस टाइम कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करता व्हेन यूर ऑन योर ओन. तो जब आप स्कूल में या फिर जहां पर भी आप टेस्ट दे रहे हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ, तो आपकी ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी एज अपोज टू जस्ट रिवाइजिंग योर नोट्स बार 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 बार. तो दैट आर द टिप्स दैट आई हैव फॉर बोथ ऑफ दोस सब्जेक्ट्स. ओके सो मतलब आपने जनरल टिप्स दोनों के लिए बताए. सो व्हाट आर द स्पेसिफिक टिप्स दैट अ स्टूडेंट कैन फॉलो फॉर if someone wants to get distinction in Islamiyat or in English? So specific tips क्या होंगे? इस्लामियात के लिए आई वुड से कि क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, आपकी मेमोरी भी उतनी ही ज्यादा यूज हो रही होती है जितनी आपकी राइटिंग स्किल्स यूज हो रही होती हैं. तो व्हेन यू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पेसिफिकली प्लान करें. जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है टू जस्ट रिवाइज इट एज अ बिग चंक ऑफ इंफॉर्मेशन.
तो काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स कि अगर आप किसी बैटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके जनरल फैक्ट्स, जब वो बैटल स्टार्ट हुआ था तो उसकी क्या इवेंट्स की प्रोग्रेशन क्या थी, मिडल में क्या थी, break it into smaller subparts, तो when you're revising it's like super helpful for you. एंड अभी तक तो मुझे नहीं पता कि इफ देयर हैज बीन अ चेंज इन द पेपर पैटर्न, लेकिन हमारा यही होता था, आई थिंक देयर यूज्ड टू बी लाइक अ मेजर डिस्क्रिप्टिव 10 मार्क का क्वेश्चन एंड अ 4 मार्क का क्वेश्चन। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉर इस्लामियात व्हाट आई मीन, तो आप एक प्रॉपर पूरा फ्रेम्ड आंसर लिखें स्टार्ट से लेके एंड तक एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। 4 मार्क्स वाला भी आप एक मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एक मेजर क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करें फॉर बोथ ऑफ दोज मार्क रिक्वायरमेंट्स, and then for the rest of them instead of kind of putting all of your effort into it if you do not have time, क्योंकि यूजुअली ज्यादा स्टूडेंट्स का यही होता है और मेरा भी यही था कि आई डिड नॉट स्टडी ऑन टाइम, तो जब क्रैम करने पे आता है तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, लेकिन अगर you're already at a point जहाँ पे the only thing left is कि the only way you can get it done is to cram, तो don't do every question fully, तो एक क्वेश्चन कर लें और बाकी के आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेके उसको प्रैक्टिस करें। दैट इज द टिप दैट आई वुड हैव। उसके अलावा अ टिप दैट वाज गिवन टू मी बाय माय सीनियर व्हिच वाज सुपर हेल्पफुल इज कि आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखें। ये टिप मैंने इस्लामियात में तो इतनी अप्लाई नहीं की थी, बट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आई यूज्ड इट अ लॉट, क्योंकि हमारा उसमें एनालिटिकल टाइप का पेपर था ना ए लेवल में, तो यूज एग्जामिनर रिपोर्ट्स टू लर्न कि किस टाइप की मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आर मेकिंग, एंड जब वो एनालाइज कर रहे हैं द टेक्स्ट दैट you've been given, तो what are they overlooking and how to avoid the mistakes that everyone else is making when you do your own paper. So those are the specific tips that I would have for Islamiyat and English. All right, thank you so much for giving these tips. What advice would you give to students who aspire to achieve distinctions in any of the Cambridge subjects other than Islamiyat or English? जिसमें भी वो distinction लेना चाहते हैं, and are there any specific habits or approaches that they should adopt? What I would suggest is कि regardless of the subject, आपके talent पे नहीं depend करता, आपकी skill पे नहीं depend करता, जो primary factor है which decides कि आपकी distinction आएगी या नहीं, और you have the determination to work for it or not, is to have that mindset कि if you want it, you're gonna work for it. No one is going to believe in you as much as you need to believe in yourself. And अगर आप कह रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो you have to make sure कि you are doing what you promised yourself you would do. So have the self-respect and the self-discipline for you, and have that mindset कि I am gonna do it, and I said I'm gonna do it, तो मैं जरूर करूंगी या करूंगा। तो mindset बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है in whatever you go to achieve in life. उसके अलावा I would also suggest that if you're planning on getting a distinction, if you're planning on doing anything at all in your life, in your academic career, so if you've not accomplished it yet, तो आप avoid करें to talk about it with everyone कि I'm going to do this, क्योंकि most of the people, it's really great to have supportive people around you, a supportive community around you, लेकिन हमेशा उस टाइप की कम्युनिटी नहीं होती। तो if you're just continuously going to talk about what you want to achieve, what you're going to achieve in an environment that does not support it, so they're just going to bring you down. So you should not speak of what you want to achieve so much, so just work in silence. So when you achieve it, so you can just show people the results or not even show them, मतलब it does not matter. What I mean to say is कि आप उस टाइप की इन्वायरमेंट्स में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के बारे में इतनी डिटेल में बात ना करें जहां you're not going to be supported for them, क्योंकि it affects your mindset. अगर आप अपना mindset बना के भी आएंगे, if you're going to enter an environment that's going to make you feel very bad or feel like you're alone in all of it, so it's better to not talk about it. And उसके अलावा I would say कि whenever you wake up, तो जो आपके पहले like 1 या 2 घंटे हैं उसमें जो आप पढ़ रहे हैं, that is so much better than the 5 to 6 hours you are going to dedicate to studying later in the day जब आप थके हुए होते हैं। तो जो भी आपका टाइम होता है when you wake up, आप just 30 minutes पहले भी उठ जाएं, 1 घंटे पहले उठ जाएं, जब जितना आपके लिए आसान है उससे पहले उठ के आप पढ़ें ना, that is going to be much more better than the rest of the day अगर आप अपने hours dedicate कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। Those are the tips that I would have for this. Thank you for sharing such tips, and I totally agree with you कि मतलब when you're trying to achieve something, so it's better not to
share it with someone else. एक तो ये होता है कि motivation Exactly. मतलब थोड़ी कम हो जाती है, और दूसरा ये कि सारे आपके इर्द गिर्द ऐसे नहीं होते जो कि आपको मोटिवेट करें हाँ या आपको encourage हाँ करें. Yeah, so हाँ. it's so next question. It's difficult for a high achieving student to accept lower or average grades in their exams or assessments. So how can such a student learn to accept failure? That is like a really good question क्योंकि even as a 20-year-old मैंने अभी तक figure out नहीं किया कि क्योंकि मैं हमेशा बचपन से उस टाइप की स्टूडेंट थी who hasn't really experienced failure in its set terms, you know. तो मेरे लिए Right. यही टिप होगी कि put yourself out there and fail. So it's like when you fail for the first time, it is going to feel जैसे दुनिया end होगी. It's going to feel like you are the biggest failure in the whole world. But once you experience it and you get out of it, and you will get out of it eventually, so you realize कि मतलब it wasn't really that deep, it wasn't that bad as you were making it out to be. So the way to deal with failure is to just put yourself out there and fail, and फिर उसके हिसाब से you will learn so much more. Like personally for me, it was kind of shocking क्योंकि जब मैंने एक्सपीरियंस किया था तो उससे मैंने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है in terms of my mindset and how I deal with things. तो वो ज्यादा हमारे लिए आई ओपनिंग और इंफॉर्मेटिव होता है एज अपोज टू जस्ट काइंड ऑफ ऑलवेज गेटिंग व्हाट यू वांट, ऑलवेज बीइंग सक्सेसफुल. आप कभी भी सेट टर्म्स का जो फेलियर है, जो बाकी सारे एक्सपीरियंस करें आप, वो अगर आपको नहीं फील हो रहा है तो वंस यू काइंड ऑफ फॉल ऑफ दैट हाई हॉर्स के आप भी फेल कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू फेल. you're not defined by simply successes या achievements, and it is all right. मतलब we're humans, सही है, दोनों ups and downs होंगे. तो आप लाइक बहुत कुछ सीखते हैं. तो मेरे लिए यही टिप है कि fail sometimes and you're gonna learn so much from it. लेकिन don't fail on purpose, obviously. Yeah, those are my tips. Yeah, that was a difficult question. Toppers के लिए तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कोई failure आ भी जाए, so they are not ready to accept. या वो कहते हैं कि टीचर ने कोई मतलब डिडक्ट कर दिए उनके मार्क्स, या मेरी गलती, ऐसा हो ही नहीं हाँ सकती. So हाँ this is something exactly. जो होता है. So, and accepting failure helps a person learn from their mistakes and become more successful. So, what Yeah. strategies did you employ to ensure thorough revision and adequate practice? And what was your revision plan during the last days before exam? Acha, the biggest like magical tip that I would tell anyone is कि जब आप last minute रिविजन कर रहे होते हैं and you're kind of done with your revision once, तो grab a blank sheet of paper, एक पेन उठाएं किसी भी कलर का, it does not matter. आप सारा कुछ उस टॉपिक के बारे में जितना भी जानते हैं, राइट इट ऑन दैट पेपर. आई नो लाइक इस मेथड का कोई स्पेसिफिक नाम है, बट इवन बिफोर आई न्यू कि उसका क्या नाम है, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जस्ट राइट एवरीथिंग दैट यू नो रिलेटेड टू दैट टॉपिक. उसके बाद once you're done, open your notes, open your resources, grab another pen. Red works like super well क्योंकि you kind of get that feeling of danger या फिर डर लगता है अगर आपकी जो notes हैं या चीज़ है it's covered in red or full of mistakes, तो you focus more कि गलती क्या हुई थी. So just grab a red pen, grab any colored pen, and whatever it is जो आपने गलत लिखा आप उसको correct करें. Grab another colored pen and write whatever it is that you missed जो आपने notes में से नहीं लिखा. तो what you'll have at the end of it is कि आपको पता चल जाएगा आपकी strengths क्या हैं, weaknesses क्या हैं, गलतियां क्या हैं, all on one page related to a topic आपको पता चल जाएगा. Second tip मेरी ये है कि you have to lock your phone away. तो like I am not kidding when I say that last जो last दिन थे for revision of both the exams, I am super addicted to using my phone even if I'm not doing something particular. Apps ही ऐसे होते हैं like Instagram, TikTok and like dopamine and ऐसे वाले apps जो हैं, so there is no solution for you to effectively revise unless you lock your phone away. So I used to give my phone to my mama and I was like, "Amma, isko lock karke rakh dein. Do not give it to me." And start में it's like super hard क्योंकि obviously बहुत severe addiction होती है, and I'm pretty sure most of us will relate to the fact that we are addicted to our phones. So I used to pace around the room कि मैं अब क्या excuse use करके मामा से phone वापस लूं just so I can use it for a little bit. तो मेरी first tip is obviously blank sheet of paper use करें revise करने के लिए, lock your phone away. Third is kind of basic लेकिन always have water by your side when you're revising, and snacks.
किसी भी टाइप के स्नैक्स होते हैं, हो सकते हैं हेल्दी हुए जैसे भी आपको पसंद है। फॉर मी हेल्दी नहीं थे। आई यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स और लाइक सावर कैंडीज वगैरह बिल्कुल अपने साथ। और टॉपिक रिवाइज करने के बाद आई वाज लाइक जैसे मैं खत्म करूंगी मैं ये वाली चॉकलेट खाऊंगी, ये वाला स्नैक खाऊंगी। उसके तरीके से यू काइंड ऑफ कैन मोटिवेट योरसेल्फ टू स्टडी वेल। एंड अगर आप टेस्ट देते आ रहे थे थ्रू आउट द एग्जाम सेशन, तो जब आप लास्ट मिनट रिविजन कर रहे हैं तो यू शुड गो थ्रू योर टेस्ट एंड एग्जाम्स एंड सी कि आप कहाँ कहाँ मार्क्स आपने लूज किए थे, कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कि आप ये रिवाइज, यू कैन सिंपली रिवाइज द weaknesses first and then quickly swim through your strengths। तो वो आप तभी कर सकेंगे अगर आपने actual exam settings में टेस्ट या एग्जाम दिए हैं। तो those would be the tips that I would have अगर आप जो last minute आपकी exam preparation है उसके regards में। Yeah, I totally agree with you. Students are having exams these days, and it's a stressful time for them. How did you handle exam stress? Any tips for students dealing with similar challenges? Again, I do not believe that I am a good person to advise on this topic क्योंकि for me exams दुनिया के सबसे ज़्यादा anxiety inducing दिन होते थे। तो I did not deal I did not deal well with the exam stress। I was crying, मैं like literally break लेती होती थी to cry, लेकिन वो मेरी गलती थी क्योंकि I crammed ना। तो I used to take a break, cry for 5 minutes, timer बंद किया, वापस रिविजन पे। कि इतनी ज्यादा क्योंकि यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद द इमोशंस दैट यू फीलिंग, स्पेशली अगर आप पहली दफा एग्जाम्स दे रहे हैं एंड यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली टू गिव दोज एग्जाम्स। तो यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो गाइडेंस, नो हेल्प फ्रॉम एनी प्लेस व्हाटसोएवर एंड यू हैव टू डील विद इट ऑल ऑन योर ओन। तो अब इन हाइंडसाइट आई वुड से कि थोड़ी देर के लिए रिवीजन बंद कर दें। आखिरी दिन है, ठीक है आपने रिवाइज कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। इट्स नॉट गोइंग टू एंड अप विद यू गेटिंग अ यू और एन एफ। थोड़ी देर बस अपनी बुक्स बंद करें, सब कुछ बंद करें, टेक अ ब्रेक, यूज योर फोन इफ यू वांट, और बेटर येट डू समथिंग जो आपके फोन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फोन से ऑब्वियसली ज्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे। तो जस्ट थोड़ी देर के लिए अपने नोट्स बंद करें, सब कुछ बंद करें, स्टॉप रिवाइजिंग फॉर अ व्हाइल। ठीक है, मतलब इट्स लाइक सुपर स्ट्रेसफुल, आई गेट इट। लेकिन अगर आई फील लाइक इफ आई वुड हैव जस्ट चिल्ड अ लिटिल बिट, थोड़ी सी ब्रेक ले लेती, तो इट वुड नॉट हैव एंडेड अप विद मी फेलिंग द होल एग्जाम। और उसके अलावा भी फॉर मी पर्सनली आई एम काइंड ऑफ रिलीजियस, तो लुकिंग टुवर्ड्स अल्लाह एंड प्रेइंग हेल्प मी विद द एंजाइटी दैट आई वाज फीलिंग। तो आपके लिए लाइक जो भी वट एवर मेक्स यू फील एट पीस, कुछ लोगों के लिए इट्स जर्नलिंग, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन इज सुपर हेल्पफुल टू, लेकिन फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ crying and begging Allah Mia, please please मेरी मदद कर। so you can kind of जो भी whatever makes you feel at peace, Allah, prayers, meditation, journaling, screaming into a pillow, punching a pillow, जिस तरीके से भी आप पीसफुल फील करें एंड यू कैन गेट द लाइक इमोशंस आउट ऑफ यू, तो आप वो कर लेना। तो दैट इज व्हाट आई वुड से। या फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप रिवाइजिंग फॉर अ लिटिल बिट, and two is do something that makes you feel at peace and kind of gets that intensity of emotions outside you। yeah। अच्छा, ये रोना क्यों आता है फिर एग्जाम्स के टाइम में? ये तो मुझे अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया, क्योंकि आई थिंक लाइक it's not just about our grade or it's not just about us। there are so many expectations, especially जब हम एक ब्राउन हाउसहोल्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। you might have made a promise to yourself, and अगर you said that you were going to do better than what everyone else is going to do, तो आपने खुद ही अपने ऊपर वो प्रेशर डाला होता है। तो वो जो सारा ऑनस्लॉट ऑफ इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर्स होता है, तो crying is just a way to let it out of your body, whatever that stress you're feeling। So personally for me, I do not see crying as a weakness। I just think कि if um हमारी human bodies have a mechanism which is crying, it's there for a reason। it's to kind of, क्योंकि obviously जब आप रो लेते हैं उसके बाद you feel more at peace as opposed to अगर आप अपनी सारी emotions अंदर रखी रखें, तो किसी वजह से ही वो mechanism exist करता है। crying is good for you, so just cry for a little while, get it out of you, and yeah, that's what I would say। Yes, I totally agree with you, and I'm sure the audience will find these tips extremely helpful. So practicing past papers is often recommended for exam preparation.
Did you find practicing past papers helpful in your exams? How did you incorporate them into your study routine? This one is and will most single-handedly be my biggest regret. लेकिन I think कि नोट से बेहतर पास पेपर्स है. पास पेपर से अगर आप पढ़ेंगे तो you are going to do so much better than just revising या skimming your notes. एंड एज अपोज टू आप रिवीजन या पढ़ाई भी अपने नोट से करने के बजाय आप पास पेपर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें. गेट अ पास पेपर आउट, जो टॉपिक है आप उसको सीखें, उसको रिवाइज करें और फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करें. उस तरीके से आई थिंक कि यू विल लर्न मोर, क्योंकि फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स के एग्जाम्स एंड स्पेशली ए लेवल्स के एग्जाम्स, द वे दैट वी स्टडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट इन द पेपर. तो पास पेपर प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू स्कोर वेल इन द ओ and A level exams. तो आई वुड से कि प्रैक्टिस ऑल ऑफ द एग्जाम्स. एंड आई थिंक मैंने पहले भी मेंशन किया, जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं दोज आर गोइंग टू काइंड ऑफ गिव यू द होल एज, ताकि सिर्फ आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, आप जो मेजोरिटी आपका बैच या आपसे पहले वाला बैच गलतियां करके गया है आप उनसे भी सीख रहे होते हैं. तो पास पेपर्स आर सुपर 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 इम्पोर्टेंट फॉर यू टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम्स. All right, so practicing past papers requires effort, but in the end, you find it easier to attempt your final exam. Moving on to the Yes, most exactly. commonly asked question: what makes the paper of a distinction holder unique from others? What do you think is the distinguishing factor? So like when I found out कि a distinction existed, तो there were like no resources for me to know कि किस तरीके से different होता है, किस तरीके से हमें मिल सकती है distinction, क्या हम कर सकते हैं. तो like through experience I believe कि जैसे most of the people are going to rely on external notes. लोग अपने नोट्स नहीं बनाते, ऑब्वियसली टाइम नहीं होता या फिर उनको बनाने नहीं आते, तो दे लर्न फ्रॉम somebody else's notes जो बहुत पॉपुलर होते हैं. तो जब वो पेपर जाके लिखते हैं वर्ड टू वर्ड, दे आर राइटिंग व्हाट somebody else has already written. और उस हॉल में बैठे 10, 20, 100, बहुत ज्यादा लोग वही वाला एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर लिख रहे होंगे. तो अगेन देर इजंट अ सर्टेनिटी व्हेन आई से दिस, लेकिन आई थिंक कि आप जब खुद सारा अपना आंसर प्लान करके लिखते हैं और आप खुद अपना वो फॉर्मुलेट करके लिखते हैं, दैट इज अ यूनिक आंसर दैट इज सिंगुलर टू यू, तो वो ज्यादा बेहतर होता है. एंड उसके लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिस्टिंक्शन होल्डर्स अराउंड मी जिनके इसी टाइप के लाइक डिस्क्रिप्टिव या ऐसे बेस्ड सब्जेक्ट्स में आई हैं डिस्टिंक्शंस, दे वर लाइक गुड राइटर्स टू. तो हैविंग द राइटिंग स्किल to know how to write the question, to know how to put that information into paragraphs is like super helpful. और उसके लिए it's not necessarily कि आप बहुत like flowery descriptions use करें, adjectives use करें, लेकिन बस जो आप लिख रहे हैं आप वो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्रॉपर प्रोग्रेशन के साथ लिखें ना, तो आई थिंक ये उस तरीके से इट कुड बी के डिस्टिंक्शन होल्डर का पेपर इज डिफरेंट टू अ नॉर्मल पर्सनस पेपर, राइटिंग स्किल्स के हिसाब से एंड द वे दैट वो जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो उनके पर्टिकुलर उन्होंने अपने नोट से ही यूज किया है, विच इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन एल्सेस नोट्स या फिर वो जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं उससे. Okay, one question I'll add here. When you come across a question that you don't know the answer of, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? What did you did? उस वक्त तो पहले 2 मिनट्स यू सिट डाउन एंड यू पैनिक कि मतलब ये क्या हो गया, ये तो कहीं से भी कुछ भी नहीं बन रहा है. लेकिन व्हाट आई फाउंड हेल्पफुल फॉर व्हाट आई डिडंट नो वाज कि आप उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें पार्ट्स में, कीवर्ड को सर्कल करें एंड काइंड ऑफ गो थ्रू योर ब्रेन कि ये वर्ड्स मैंने कहाँ सुने थे, ये कीवर्ड्स कहाँ यूज हुए थे. और अपनी जो सही है, आपको प्रोबेबली उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक की वजह से यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी डिफरेंट आंसर एज अपोज टू समथिंग जो आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से आती है. तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको कम्प्लीटली डर की वजह से छोड़ भी नहीं देना चाहिए. आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, कीवर्ड्स को अलग अलग करें और उस कीवर्ड से रिलेटेड जो सी आपको इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको लिख दें. फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे अगेन क्योंकि इट इज डिफरेंट देन नोइंग एवरीथिंग, लेकिन एटलीस्ट यू ट्राइड. और ट्राई करने का यही होता है कि आप देख लेना कि कीवर्ड्स क्या लिखे हैं क्वेश्चन में और उसके हिसाब से आप अपना आंसर फॉर्मुलेट करके लिखें. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अब ऑब्वियसली आपको एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पता तो आप इधर उधर की बातें भी डालेंगे, लेकिन इफ यू हैव द टाइम तो आप ऐड कर दें थोड़ा सा, मतलब सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन जो उससे ब्रांच आउट होके जा रही है थोड़ी सी वो भी ऐड कर दें. तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू वुड हैव डन.
I would have done. एंड जो मेरे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे, जो आई डिड हैव दोज क्वेश्चंस थोड़े से, तो उसमें मैंने यही किया था कि कीवर्ड्स पे फोकस करके, क्योंकि हमारी इंग्लिश की जो मेरी मैम थी, शी यूज्ड टू मेक अस ब्रेक द क्वेश्चन इनटू कीवर्ड्स, एंड हम उसी के हिसाब से क्लास में भी प्रैक्टिस करते थे. तो व्हेन यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन यू डोंट नो, तो जो आपने टिप्स क्लास में सीखी होती हैं, they really help you in that moment of anxiety and panic जो आ जाता है when you don't know कि किस तरीके का क्वेश्चन आ गया. So thanks for sharing the secret sauce to getting a distinction with us. How did your excellent academic performances shape your future educational or career choices? Have they opened up any unique opportunities for you? For me personally, I believe कि जो मैंने skills सीखी हैं, the self discipline, the self mindset या self motivation जो मैंने उससे सीखी है, that has proven to be more helpful than the actual opportunities opening doors for me. क्योंकि I have felt कि पाकिस्तानी system of education में, when I entered the Pakistani system of education, तो my distinctions have not been rewarding enough for me, क्योंकि यहाँ पे there is like kind of like an aura of you don't even know कि OA levels की होते क्या हैं, grades कैसे आते हैं, distinctions क्या होती हैं. तो most people don't even know what a distinction is, तो they do not grasp the concept कि ये किस type की achievement है. तो और बहुत ज्यादा I have felt कि जो से भी educational institute में I have entered, I have participated, उसमें it did not count. Again, क्योंकि जो पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, दैट इज नॉट काइंड ऑफ सूटेड फॉर आवर बोर्ड. जो ओ एन ए लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो इतना वेल सूटेड बोर्ड नहीं है. If you're planning on studying abroad, so obviously you will have a very different reaction, क्योंकि जो knowledge है about what a distinction is, about what these achievements are, it's very different. लेकिन for me in the Pakistani system, I did not feel कि it was rewarding enough. लेकिन I do believe कि जो उसने मुझे इन subjects ने, इन accomplishments ने जो मुझे skills दी हैं, that are going to help me in the long run and in achieving whatever else I want to achieve. Yeah, that is it. That's nice to hear. Reflecting on your experience, is there anything you would have done differently in your approach to your exams? Any lesson learned that you can share with the aspiring students? I would say कि it's like not that deep. सही है कि आप पढ़ाई करें, but to simply rely on that trope of being the over ambitious perfectionist student नहीं इतना, it's not that deep. You do not need to sacrifice your whole life, your whole teenage experience पढ़ाई के लिए. तो सही आप पढ़ें, लेकिन have fun, have those experiences जो हमारी teenage life को shape up करते हैं. And even then when you're going to like outside पढ़ाई के बाहर जो भी आप experience gain करेंगे, तो kind of make sure कि your whole life is not kind of directed पढ़ाई to पढ़ाई to phone. बाहर जाके experience life, make friends, do things, go to social events. ठीक है, studies matter, grades matter, tests matter, but at the end of the day, the person that you become, with even with average grades, if you do not end up getting the grades that you got, but you had a life outside of those grades, so that is much better for you as opposed to sacrificing everything there is just to get those accomplishments. तो सारी चीजों में बैलेंस रखें, पढ़ाई में बैलेंस रखें, have fun. You can, मतलब it's good to have those ambitions, लेकिन those ambitions should not come at the cost of you sacrificing your whole life या your whole teenage experience just for those monetary या academic achievements. तो ठीक है, ambition is good, your dreams related to your academics are good, लेकिन make sure कि you have experiences outside of studying too when you're trying to achieve everything that you're doing. Yeah. Alright, और ये चीज हमें बहुत देर से रियलाइज हुई है कि इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग, बाकी चीजें भी साथ साथ करनी है और एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हाँ. इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट हाँ. है और सबको साइड बाय साइड लेके चलना है. Yes. Yes. And like the good thing is कि especially for people who are applying abroad, वो वहां पर ना like the mindset has shifted. You do not have to be an all-rounder perfect Yeah. student to Yes. get into good universities. आप एक average student हैं जिसने extra curriculars ऐसे किए हैं जो are related to what your passions are. बेशक आपका एक बहुत niche particular extra curricular है जिस पे आपने focus किया था and you're just
an average student with average grades. So you have a better chance of getting into university as opposed to a person जिसके straight A's हैं and they have had no life outside of those grades. So I think like बिल्कुल. it's super good for like the change जो mindset में आ रहा है and hopefully इधर भी आ जाएगा. But हाँ, it's good first इंशाल्लाह. to अल्लाह करे इधर भी yeah. आ जाए. हाँ. Okay, so Yeah. this was an extremely helpful conversation that we had with you. Your journey is truly inspiring, and it made me realize that it's just a little more effort and dedication that can make life ambitions turn into reality. I'm sure it has answered the questions of our audience, and they have now got the right direction to excel in their exams. If you have any questions, so feel free to write them in the comments below. Thank you so much, Hajra, for joining us. Allah Hafiz. Thank you so much for having me. Allah Hafiz. Allah Hafiz.